Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta and I'm a consultant in fetal medicine. So today we are going to talk about congenital cardiac abnormalities, very specifically conotruncal malformations. तो जो बेबी का जो हार्ट होता है उसमें जो आउटफ्लो ट्रैक्स होती हैं, उन आउटफ्लो ट्रैक्स की जब मेल्फॉर्मेशन होती है तो उनको हम कॉनोट्रंकल मेल्फॉर्मेशंस बोलते हैं. तो कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ तकरीबन 0.7 से 0.8% होती है और तकरीबन 100 में से 1% बीबी को हमको व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई इज द कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़. तो मेकिंग अ डायग्नोसिस what exactly that we are dealing up with, it is of paramount importance. We do have our own clinical ways by which we can follow them up and look around for the severity in an antenatal ultrasound. More so, some diagnostic investigations, they are mandatory, that they should be done whenever we are identifying these congenital abnormalities. So they have got a lot of implications. What exactly that we are dealing with, what exactly is the genetic etiology, and how the baby is going to fare after the baby is born, what sort of complications that we can expect, and sort of the clinical course of that particular cardiac disease and an associated malformations when we identify the genetic mutations. तो कुछ केसेस के दिखा के मैं आपको ये सब बातें बता देता हूँ. So whenever we are doing a cardiac assessment now, so three vessel view में we identify that the trachea is away from these three vessels. But in this case, the trachea is juxtaposed between the pulmonary trunk and the arch of aorta, right? So this can be a right aortic arch and a double aortic arch. This is a second case in which we can see a subaortic VSD and an overriding aorta and then hypoplastic and atretic pulmonary trunk. So this is a classical tetralogy of Falley. Both of them are one of the commonest congenital cardiac abnormalities. Amniocentesis and invasive testing along with the genetic marker study to the fetus is mandatory because we can identify these big deletions. So this is a 15q deletion and this is a 3q deletion that we have identified. So जितना ज़रूरी एंटीनेटली किसी कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटी को पकड़ना है, उतना ही ज़रूरी एक जेनेटिक एवेल्युएशन करना भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरीली ज़रूरी है. Because what we believe is this, that it could be trisomy 21 which has got a very high risk. More so the micro deletions and duplications की भी risk तकरीबन 1 to 2% हो सकती है. So we have had a lot of cases across in which we have identified a 22q micro deletion. तो यूजुअली whenever we are identifying conotruncal malformations at the top, हमारा ट्राइसोमी 21 और 22q माइक्रो डिलीशन होने का जो सस्पिशन है, जो रिस्क है, जो शक और शुबा है, वो ज़्यादा होता है. बट इन दो केसेस में हमने वी हैव आइडेंटिफाइड तकरीबन 24 MB डिलीशन इन द लॉन्ग आर्म ऑफ 15 क्रोमोसोम एंड 3 क्रोमोसोम. So meaning thereby that these are sort of an unusual deletions and so meaning thereby that एंटीनेटली ये सब टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कि व्हाट टू एक्सपेक्ट नाउ फॉर फर्दर ऑन, कि दैट वी आर डीलिंग विद द बेबी विच कैन हैव अ लॉट ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, associated abnormalities. After the baby is born, the baby would definitely need a surgery, corrective surgery, cardiac surgeries to correct the congenital abnormality. But with these genetic defects in the background, there is a whole lot of things to talk about and there is a lot of things to counsel the patient, right? So meaning thereby that antenatally diagnose होने के बाद में उनका genetic evaluation होना बहुत ही important है. कुछ केसेस जिनके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है, उनकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी रहती है और आफ्टर द बेबी इज बॉर्न उनकी सर्जरी होने के बाद में देन दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड हेल्दी लाइफ एंड द प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड, राइट? सो डूइंग अ जेनेटिक टेस्ट to the fetus is as mandatory as looking around for these congenital cardiac abnormalities in the fetus. Thank you very much for your patient listening.